Good morning, dear students. Today I will start Coulomb's law in vector form. कल मैंने Coulomb's law लिया था, but we have to understand कि Coulomb's law में हम लोग जो सीखे थे कि F is equal to K Q1 Q2 by R square, ये फॉर्मूला बस मैग्नीट्यूड को बताता है और इसी फॉर्मूला को हम लोग ये भी लिखे थे कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square वैक्यूम या एयर के लिए ये फॉर्मूला लिखे थे। लेकिन ये बस फोर्स का मैग्नीट्यूड बताता है, ये डायरेक्शन नहीं बताता है। तो अगर डायरेक्शन जानना रहे तो मैं क्या करूंगा, तो डायरेक्शन जानने के लिए हम कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, मतलब डायरेक्शन के फॉर्म में। कैसे लिखेंगे? एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स से दिस इज आवर Q1 चार्ज, लेट्स से दिस इज आवर Q2 चार्ज, लेट्स से बोथ चार्ज इज पॉजिटिव। The distance, let's say the distance is equal to mod r vector. I am only taking the magnitude. So what will be this? This will be force on the second charge due to first charge, that is F21. And what will be this? This will be force on the first charge due to second, that means F12. Is it? Displacement में जैसे हम लोग सीखते हैं, like displacement में हम लोग क्या बोलते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर। तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। इस डिस्टेंस को बोलेंगे, जब हम यहां से यहां जाएंगे तो इसको बोलेंगे R2 माइनस R1 और इस डायरेक्शन को बोलेंगे R1 माइनस R1 वेक्टर माइनस, क्योंकि अभी मैं कहां से कहां जा रहा हूं, यहां से यहां। तो दिस विल बी आवर फाइनल पॉइंट, फर्स्ट विल बी आवर फाइनल पॉइंट, सेकेंड विल बी आवर इनिशियल पॉइंट। सो फाइनल माइनस इनिशियल, जब मैं यहां से यहां जाऊंगा this will be our final point, that means second will be final point, first will be initial point, so this will be R2 minus R1. Is it? Now see, if suppose I want to write F12, how we will write in vector form? This will be equal to K Q1 Q2 by mod R का square, but here we have to write direction. So how will we write direction? We know unit vector concept, that unit vector is equal to vector divided by magnitude of vector, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1, लेकिन ये डायरेक्शन दिखाता है। तो इसका अगर यूनिट वेक्टर F12 का डायरेक्शन क्या है? R1 माइनस R2। तो R1 माइनस R2 का यूनिट वेक्टर लिख देते हैं। तो व्हाट वी विल राइट? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का यूनिट वेक्टर, दैट विल बी F12. This is the direction of F12. So what we will write, that F12 vector is equal to K Q1 Q2. अच्छा, understand one more thing. Can we write that mod R vector is equal to R1 vector minus R2 vector का मैग्नीट्यूड is equal to R2 vector minus R1 vector का मैग्नीट्यूड। ये तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम R1 माइनस R2 का जितना है उतना ही mod R का है, उतना ही R2 माइनस R1 का है। तो क्या मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ कि इसको मोड आर का स्क्वायर नहीं जानते दीजिए, यूनिट वेक्टर को क्या लिखते हैं? वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो इसको लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और इसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। देन आफ्टर व्हाट वी कैन राइट, दैट F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय, अच्छा, मोड आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? R1 माइनस R2। तो ये क्या हो जाएगा? R1 माइनस R2 का R1 माइनस R2 का स्क्वायर, एंड दिस विल बी R1 माइनस R2, एंड दिस विल बी R1 माइनस R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। नाउ इफ आई विल मल्टीप्लाई दिस, व्हाट विल बी दिस? आई एम राइटिंग इट हियर। व्हाट विल बी F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 by R1 vector minus R2 vector का whole cube, and here will be R1 minus R2 vector. Is it? So this is Coulomb's law in vector form. Copy it. So this is F12. What is this? This is F12. Can we write F21? F21 is also easy. What will be F21? Force on second vector due to first vector. Here this was R1 minus R2, so here it will be R2 minus R1. So can we write K Q1 Q2 divided by R2 vector minus R1 vector?
का whole cube, and what will be this r2 vector minus r1 vector का mode. So this is Coulomb's law in vector form. बहुत ही इजी टॉपिक होता है ये भी. Write everything. Make class notes properly so that you can revise during exam time, because this all topic is very important for both point of view. But for competition, we will take some numerical questions right now. So my next topic is some numerical question on Coulomb's law. Numerical questions on Coulomb's law. Write the topic. Numerical question on. एक सिटिंग में पूरा लेक्चर देखने का हैबिट बनाइए. इफ यू विल सी होल लेक्चर इन वन सिटिंग, दैट देन यू विल बी बेनिफिटेड. Numerical question on Coulomb's law. Write the first question. First question I am taking from NCERT book, and the question is, let's say this is our Q1 charge, let's say this is our Q2 charge, let's say Q1 charge value is equal to 2 into 10 to the power minus 7 coulomb, Q2 charge value is equal to 3 into 10 to the power minus 7 coulomb. The distance between Q1 and Q2, this distance is equal to, let's say this is equal to 30 centimeter. Then write the question. Question is, find electrostatic force between both charge if charge is present in air. क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? वी विल अप्लाई Coulomb's law. What is Coulomb's law? F is equal to K Q1 Q2 by R square. क्या होता है कि K का वैल्यू 9 into 10 to the power 9, Q1 का वैल्यू 2 into 10 to the power minus 7, Q2 का वैल्यू 3 into 10 to the power minus 7 divided by what is the distance? Distance R is given, and R is given as 30 centimeter. 30 centimeter if you will convert into meter, this will be 0.3 meter. So 0.3 का F is equal to, this is K, this is Q1, this is Q2, and this is R का square. So K Q1 Q2 by R square. If you will calculate this thing, then the answer will be 6 into 10 to the power minus 3 Newton. That will be the answer, 6 into 10 to the power minus 3 Newton. Clear? Write the next question. This question was very easy. The next question. And the question is, let's say this is Q1 and Q1 value is equal to 0.4 microcoulomb. Let's say this is Q2. Q2 value is equal to minus 0.8 microcoulomb. Let's say the distance R is not given. Let's say the distance R is equal to R. Write the question. If electrostatic force acting between both charge is equal to 0.2 Newton, then find
the distance between both charges. Find the distance between both charges. So what will be the distance between both charges? We will apply Coulomb's law. F is equal to K Q1 Q2 by R square. Force is given. So force is how much? On the place of force, write 0.2 Newton. K value will be 9 into 10 to the power 9. Q1 is how much? Q1 is 0.4 microcoulomb. If I will convert microcoulomb into coulomb, you have to multiply with 10 to the power minus 6. 0.4 into 10 to the power. And we have to take only magnitude of charge because I am only interested in the magnitude of the distance. So I will not take negative. It will be 0.8 into 10 to the power minus 6 microcoulomb to coulomb divided by R square. Divided by R square. So now F is equal to K Q1. This is K. This is Q1 Q2 by R square. So what will be R square? If you will calculate R square from here, this R square will be equal to 9 into 10 to the power 9 into 0.4 into 10 to the power minus 6 into 0.8 into 10 to the power minus 0.8 into 10 to the power minus 6 divided by 0.2. If you will calculate this thing, then R square will become equal to 16 into 9 into 10 to the power minus 4. This will become 16. And if you will find R, this will be 4 into 3 into 10 to the power minus 2. That will be equal to 12 into 10 to the power minus 2. R will be equal to 12 into 10 to the power minus 2. That means 0.12 meter. That means how many centimeter? 12 centimeters. So R is equal to how much? 12 centimeters. That will be the answer. That is the next question. Copy it fastly. First try to solve all the question by yourself. Then copy it. Okay, next question. Next question is, let's say this is a equilateral triangle. This point is A, this point is B, this point is C. On point A there is a charge that is Q. Let's say this is plus Q, this is also plus Q, this is also plus Q. Next the question. Find net force on vertex C. Find net force on vertex C if triangle is an equilateral triangle. If triangle is an equilateral triangle. So what will be net force on vertex C? Let's try to find. Let's say this is vertex C. So on vertex C, who will apply force? There is two charge. ये भी force लगाएगा and this charge will also apply force. That means this charge will apply force as well as this charge will apply force. So on vertex C, in which direction this charge will apply force? तो हमने क्या बताया कि जो भी charge force apply करेगा वो along the line joining two charge. तो इस charge और इस charge को कौन सा line join किया? ये. तो इस पे जो force लगेगा वो भी along the line joining two charge लगेगा. Since this is positive, this is also positive. So on this charge will repel this charge. तो इस charge को ये charge क्या करेगा? Repel करेगा किस direction में? Along the line joining the two charge. So what will be the
direction, this is FCB, that means force on C due to B. क्या इस चार्ज पे ये चार्ज भी फोर्स लगेगा? यस. इन विच डायरेक्शन? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज, एंड दिस इज पॉजिटिव, सो इट विल ऑल्सो रिपेल इट. सो द डायरेक्शन विल बी दिस. व्हाट विल बी दिस डायरेक्शन? फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए. सो वी विल एड FCA. Since this is a equilateral angle, so this angle will be how much? 60. So this angle will be also how much? 60. So now we know the situation that if suppose there is a vector there, this is B vector, and the angle between A vector and B vector is theta, then what will be the resultant vector? Resultant vector is equal to square root of A square plus B square plus 2AB cos theta. This will be the resultant. That means if I will apply the same concept here, then we can find the resultant of these two forces. But before that, let's find that what will be FCB. What will be FCB? Let's say if this is a equilateral triangle, let's say the side length is equal to A. The side length is equal to A. So what will be force on C due to B? This is given. Side length of triangle is given. So what will be FCB? FCB is equal to K Q1 Q2. Both is QQ. So Q1 Q2 by distance is how much? A square. So this will be FCB. That means FCB is how much? KQ square by A square. What will be FCA? FCA is also KQ square by A square. Is it? Because FCA is what? The distance is A. Both charges Q. So this will be KQ square by KQ1 Q2 by R square. Can we write that FCB is equal to FCA? So let's say FCB is equal to FCA. So here I am writing that here FCB is equal to FCA, and let's say both is equal to F. Both is equal to F. So FCB is also how much? F. FCA is also how much? F. And the angle is how much? 60. So can we find the resultant? Yes. What will be the net force? Net force will be equal to square root of first k square plus second k square plus 2 into first into second cos theta. So what will we get? First is F square plus 2 F cos what is the angle? 60. Cos 60 is how much? Half. If suppose cos 60 is equal to half, so we will replace this cos 60 with half. This half and half will cancel. What will remain? F into F is F square. So F square plus F square, 2F square plus F square. How much? 3F square. So what will be F net? F net will be equal to square root of 3F square, and 3F square means how much? F root 3. So that will be the resultant vector. Resultant vector will be how much? F root 3. And what is F? F is equal to, here we have find F is equal to KQ square by A square. So this will be equal to KQ square by A square root 3. That will be our final answer. Complete fastly. Take the next question. Let's say this is a square. Let's say this is a square, and on each and every vertex, let's say this is our vertex A, let's say this is our vertex B, this is our vertex C, this is our vertex D. Let's say here we have placed plus Q on each and every. Here let's say I am placing plus Q. This is vertex A, and I am placing plus Q charge. Here also I am placing plus Q charge, but here I am placing minus Q, and here I am placing plus Q. So one charge is negative here. This is a square,
let's say square side is equal to A. What is the side length? This side length is equal to A. So find, then the question, find net force on vertex C. Find net force on vertex C. C पे कितना नेट फोर्स लगेगा? तो C पे कौन कौन फोर्स लगेगा? क्या ये लगाएगा? यस. किस डायरेक्शन में लगेगा? दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. सो ये पॉजिटिव नेगेटिव को किधर खींचेगा? इधर. तो C चार्ज को, C पे जो चार्ज माइनस क्यू लिखा है, इस पे ये फोर्स लगाएगा, लेकिन किस डायरेक्शन में लगाएगा? So what will be this name? Force on C due to D. क्लियर? क्या प्लस माइनस क्यू को ये भी खींचेगा? किस डायरेक्शन में? अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्ज. तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो किधर खींचेगा? इधर, इस डायरेक्शन में. तो इसका क्या नाम होगा? फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी. क्या इस माइनस क्यू पे और कोई फोर्स लगेगा? ये खींच लिया, ये खींच लिया, क्या ये भी खींचेगा? यस. इन विच डायरेक्शन? अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्ज. तो दोनों चार्ज को कौन सा लाइन ज्वाइन कहते हैं? इसका डायगोनल. तो ये जो फोर्स लगेगा, ये किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में. तो इसका नाम क्या होगा? फोर्स ऑन सी ड्यू टू, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, FCA. क्लियर? इस चीज को हम बाद में डिस्कस करेंगे. इससे पहले हम लोग ये पता कर लेते हैं कि ये जो दो फोर्स लगा, ये दोनों फोर्स कितना डिग्री एंगल पे लगा? 90, बिकॉज दिस इज स्क्वायर. तो इस दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा? इसके बीच में. निकालते हैं कि वो रिजल्टेंट कितना होगा. तो FR कितना होगा? पहले FCB निकाल लेते हैं. व्हाट विल बी FCB? FCB इज इक्वल टू, FCB मीन्स दिस फोर्स KQ1 Q2. तो KQQ बाय A स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस कितना है इस दोनों के बीच में? A. तो KQ, दैट मीन्स KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर. This will be equal to FCB. What will be FCG? FCG will be equal to how much? KQQ by A square. That means same. That this is also KQ square by A square. So can we write that FCB is equal to FCG? And this is equal to, let's say, F. This is equal to F. So what will be the net force? So F net will be equal to square root of, this is first force F, this is second force F. So what will be the force? First का square plus second का square plus 2, first into second into cos theta. Cos theta will be cos 90. Cos 90 is how much? 0. Cos 90 is how much? 0. So this complete term will become 0 because cos 90 is 0. So what will be F net? F net will become equal to square root of F square plus F square. That means 2F square. ये complete term कितना हो जाएगा? 0 because cos 90 is 0. So square root of 2F square means how much? F root 2. F root 2. F root 2 का मतलब KQ square by A square root 2. ये किसका वैल्यू आया? इसका और इसका रिजल्टेंट का. तो ये कितना आया? KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर रूट 2. अब तक हम ये फोर्स नहीं लिए, बस इसका और इसका रिजल्टेंट निकाले कि इतना आएगा. अब ये फोर्स भी तो आएगा. इस फोर्स का नाम क्या था? फोर्स ऑन C ड्यू टू A. तो क्या हम फोर्स ऑन C ड्यू टू A निकाल सकते हैं? कितना होगा? KQ स्क्वायर बाय Q1 Q2. लेकिन डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस कितना होगा? ये भी A है, ये भी A है. तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा? हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2A स्क्वायर. दैट मीन्स A रूट 2. तो ये डिस्टेंस कितना होगा? A रूट 2. उसी का स्क्वायर कहेंगे तो कितना होगा? 2A स्क्वायर. बिकॉज दिस इज KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर ना. तो A रूट 2 का स्क्वायर, KQ स्क्वायर बाय डिस्टेंस इज हाउ मच? A रूट, दिस डिस्टेंस इज हाउ मच? A रूट 2. So this will be KQ square by KQ1 Q2 by R square. So this will be equal to KQ square by 2A square. How much? Root 2 का स्क्वायर, 2 A का स्क्वायर, A स्क्वायर.
So kq square by 2a square. Now what will be the net? Now let's say F just net. Net new force is equal to FCA plus F net. पुराना वाला रिजल्टेंट ये इधर आया, एक तो फोर्स FCA लगेगा और एक क्या लगेगा F नेट जो निकाले थे इसका और इसका रिजल्टेंट। तो FCA कितना है KQ स्क्वायर बाय 2A स्क्वायर और इसका जो रिजल्टेंट था जो मैं F नेट निकाला था वो कितना था KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर का √2। यहाँ पे कुछ कॉमन आ जाएगा तो न्यू रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा वो आएगा इसका एलसीएम 2A स्क्वायर, दिस विल बी KQ स्क्वायर प्लस something will be common here. If I will take common, so F just net will be equal to KQ square by A square is common, so here will be 1 by 2 plus here will be √2. So this will be equal to KQ square by A square and this will be 1 plus 2 √2 by 2. 1 plus 2 √2 by 2, or you can simply leave here. You can simply leave here. This is the answer. This is the answer. That is net resultant force of all the three force will be how much? KQ square by A square 1 by 2 plus √2. Clear? Add one more question. Let's say this is a square. Each charge is equal to plus Q. Let's say this is also how much? Plus Q. This is also how much? Plus Q. This is also plus Q and this is also plus Q. This is a square. Since this is a square, so all the side length will be also same. Let's say this all the side length is equal to A. This is equal to A. Let's say on the center, this is first diagonal. This is sorry. This is first diagonal. This is so let's suppose this is a straight line. Let's say this is equal to, this is also plus Q. So what will be the net force? What will be the net force? Let's say this is equal to A, this is B, this is C vertex and this is D. Find net force. Let's say this is plus capital Q. Find net force on capital Q, which is capital Q charge, which is placed in center, which is placed in center of a square. समझिए कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये डिस्टेंस, this distance
and this distance. All the distance will be same. All this four distance, this distance, this distance, this distance and this distance. All the four distance will be same. तो यहाँ पे इस चार्ज पे क्या ये फोर्स लगाएगा? इस चार्ज पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? क्या ए लगाएगा? हाँ, ए किस डायरेक्शन में लगाएगा? तो ए लगाएगा, दिस इज पॉजिटिव, सो फोर्स ऑन ए विल बी अलोंग द लाइन रनिंग टू चार्ज एंड दिस विल बी एफ ए. क्या बी भी लगाएगा? ये पॉजिटिव, तो फोर्स बी कहां लगेगा? रिपेल करेगा, दिस विल बी एफ बी. क्या सी भी लगाएगा? यस, इनवर्स डायरेक्शन. ये भी इसको रिपेल करेगा, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में. तो ये क्या होगा? एफ सी. और जी भी लगाएगा, ये पॉजिटिव, तो ये इसको रिपेल करेगा अलोंग द लाइन रनिंग टू चार्ज, दिस विल बी एफ जी. क्या सबका मैग्नीट्यूड सेम होगा? क्यों? क्योंकि लाइक से एफ बी क्या होगा? एफ बी होगा के क्यू बाय व्हाट विल दिस डिस्टेंस, first find this distance. So this distance will be how much? This complete distance will be how much? Hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. So let's say this whole is hypotenuse. So hypotenuse square is equal to a square plus a square. So hypotenuse square will be how much? 2a square. So hypotenuse will be how much? A root 2. This is complete hypotenuse. We have to find its half. So let's say this distance is equal to x. So what will be x? X will be equal to a root 2 by 2. So a by root 2. So this will be equal to a by root 2 and we will write that thing here. A by, so k q1 q2 by a by root 2 ka square. This is fb. Like that fg will be also same. FA will be same, FC will be same. So if I will find all this, FA will be equal to FB, will be equal to FC, will be equal to FG. All the force will be same in magnitude when you will calculate. And let's say this is equal to F. So if suppose FB is equal to FG, तो ये दोनों तो cancel करेगा. क्यों? If suppose 5 Newton force is acting in this direction and 5 Newton acting in this direction, so 5 Newton will cancel 5 Newton. ये फोर्स और ये फोर्स भी सेम है. तो लाइक से 5 न्यूटन इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन एंड 5 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन, so both will cancel each other. So what will the net force on plus q? That will be 0. So what will be like? That net force on plus q charge will be equal to